Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta in Mumbai, and my guest today, somebody whose voice, if you are not familiar with, I am sure your parents, your older siblings are, and frankly, I'll be surprised if you aren't, because if you like Hindi cinema and Hindi film music, there hasn't been a voice like Ameen Sayani Saab. Ameen Saab, I hope I pronounce your name right now. Just lengthen the sa slightly, Sayani. Sayani. That's right. Sayani. So why don't you welcome our viewers also with your famous call sign? My call sign is just Behnor Bhaiyu, like Vivekanand used to say. Brothers and sisters, or sisters and brothers. I always say sisters first, Behnor Bhaiyu, because I always believe in ladies first. सब लोग कह के बताइए ना अपने लहजे में एक. हाँ, तो बहनों भाइयों, मैं आपका साथी अमीन सायानी बोल रहा हूँ और बड़ी खुशी हुई मुझे आज यहाँ आने में, क्योंकि अरे इतनी बड़े इंटरनेशनल पर्सनालिटी शेखर गुप्ता साहब से मैं बात कर रहा हूँ, अंदर थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ. नहीं सर, आई एम टॉकिंग टू यू एज ए हिंदी म्यूजिक फैन and as your fan, because all of us have learnt our familiarity with Hindi film music thanks to you and this landmark thing that you ran called Bina Ka Geet Mala for many years non-stop. Aajkal to, you see, this was much before any talent hunt or any top 20, top 30 came in. This was the top 13, top of the pops in India for almost 2 decades. Well, let me correct you in one small thing. When Geetmala started, it was not top of the pops. Yes. It was just 7 or 8 songs, selected songs, which were played every week, and people were asked, listeners were asked to rearrange these songs in their own order of popularity. And that led to this. That led to this. Yes. And there was a sort of a little prize, jackpot every week of 100 rupees, which if your the list was also made on the basis of the popularity list that the people used to write in, and it's a very strange story. Very briefly, I'll tell you. Sir. When Geetmala was about to start, what had happened was, why did it start? Because on Radio Ceylon, there was a program called Binaka Hit Parade in English, done by an announcer from Colombo, a man called Happy Go Lucky Greg. And that's a nice name. That's a nice name for an announcer. Happy Go Lucky Greg. Greg Roshkovsky was his name. So that hit parade was very popular, and they also had a small competition like this in the hit parade. In the Hindi program, there was not supposed to be any hit parade, and people started loving it in India also, but only the people who were fond of Western music. Yes. Indians didn't know what the hit parade format was. Right. So anyway, that program used to get a mail of about 300 to 400 letters per week, and it was thought that in case the client wanted to experiment in Hindi and have a Hindi program on Hindi film music, because Hindi film music was extremely popular and All India Radio had banned it. So there was no Hindi film music running on All India Radio then. And so they said, let's experiment. And they said, look, we want somebody who will not only produce the program, but also script it, also present it, and also check the mail. Because they were not expecting more than about 50, 60, 70 letters a week on that. So, and they were going, the client was going to pay 25 rupees a week for a person who did all this. Which year was this, sir? This was 1952. December 1952. So if I calculate right, you were 19 years old. I was born in 1932. So you're 20 years old, 19 or 20 years old. Yes. So I was given the program because nobody
none of the senior people there were willing to take it up. So I was given the program, and I had been an English broadcaster, quite a well-known and successful broadcaster. Right. I was brought into broadcasting by Hamid Bhai, my elder brother, who was a very fine, very well-known and very successful English broadcaster, broadcasting from the English service of All India Radio Bombay. Right. And for many years I was a broadcaster. And my Hindustani was a bit not so good. Yes. But I had learnt. And you come from a family of freedom fighters. Freedom fighters. And therefore, my mother was a social worker, and my Gandhiji had so much appreciated her work that he said, look, I want to create Hindustani as the national language of India. So start a journal in 3 scripts, in Devanagari, that is the script of Marathi as well as Hindi, in Gujarati and in Urdu. And in 3 versions, in each of these with scripts, the language should be the same in each version, simple Hindustani. So I had joined this as a peon, and it was published and edited from my home. Later on it was printed from my home, and I gradually had developed expertise in simple Hindustani. Right. So that is the gift you brought That to my parents' generation, the simple Hindustani, and then to ours. So I'll go back to when the first program was broadcast of Geetmala on Hindi, when as Ameen Sayani, the new producer who nobody really knew before that, and I put everything I had learned from Hamid Bhai, from Gandhiji, from my nationalist feelings, and I put it in, and also I linked the program in such a way that once you started listening, everything was linked one to the other, one to the other. So you could never leave the program until you reached there. Yeah. And when it was broadcast, I heard the broadcast, it sounded good to me, and I started praying to God that please God, they were not expecting more than about 50, 60, 70 letters, while the English program was getting 300 to 400 letters. I said, let me get at least 150 letters. 150 तो आए कम से कम. 150 तो आए, 100-150 तो आए कम से कम. But you know what happened? How much mail we got for that first program? 9,000. 9,000 चिट्ठियां एक प्रोग्राम, पहले प्रोग्राम के लिए. First program. In 1953. 52. 52 में. December 52. में. And people were shocked. Is Radio Ceylon so popular? And why was it so popular? Because Dr. Keskar, a Minister of Information Broadcasting, who had come in 1950 in India as the Information Broadcasting Minister, had banned commercial radio. No, Hindi film music. Oh, I see. Commercials, they were not there on. अच्छा, तो सबसे बड़े बैन तो कांग्रेस के नेहरू जी के टाइम में लगा, फिर सारा हिंदी फिल्म म्यूजिक ही बैन कर दिया. बैन कर दिया. अच्छा. और ऐसे वक्त में बैन कर दिया जब हिंदी फिल्म म्यूजिक वाज चल रहा था. इवन इन इंडिया वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर. और बड़ा नेशनलिस्ट था उस टाइम. बिल्कुल नेशनलिस्ट. नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट भी. So then the mail started expanding every week, and we had to keep all the letters because if somebody may say नहीं मैंने तो correct भेजा था. वो तो 50,000 हो गए उनकी चिट्ठियां आपकी per week. It reached in 1 year, the weekly mail reached rose up to about 65,000 letters per week. My goodness. And उस ज़माने में. It was chaotic. I mean, people got so fed up of those letters collecting in the office that finally the client as well as my office, they both said, look, let's cut this out. It was a half-hour show. Let's cut this out, make it into a real hit parade. A 1-hour show, real hit parade with no competition. Yeah. And that's how in 1954, this half-hour program became a 1-hour show. And that is the Geetmala that kept the rising in popularity. और उसमें फरमाइश खत्म हो गया, रिक्वेस्ट खत्म हो गया. You just ranked them. Just right. पर सर आजकल तो रैंक करते हैं, कोई फेसबुक लाइक से रैंक करता है, कोई व्यूज से रैंक करता है कंप्यूटर पे. आपने कैसे रैंक किया ये
उसके बाद जब चिट्ठियां भी आनी बंद हो गई तो आप ये बताएं, मैं जवाब हिंदी में दूं या इंग्लिश में दूं? आप हम दोनों भाषा में बोलेंगे। दोनों भाषा में। हाँ, क्योंकि आपका म्यूजिक तो हिंदी है ना तो आप हिंदी में दीजिए। हिंदी में देता हूँ भाई। वो ये था कि पहले हमारा जो सिस्टम था, व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, एक तो हम फरमाइश लेते थे उनकी, और जो लेटर्स आते थे फरमाइश के, और काफ़ी आते, 3-4 हज़ार लेटर तो आते ही थे। और दूसरा ये था कि रिकॉर्ड सेल्स वर एन इम्पोर्टेंट गाइड उस ज़माने में, and they were very correct. We had about 20 to 30 record shops all over India, from which the SEBA people, the clients, used to send their men and collect the sales lists and send it to us, and we used to compute that along with the farmaish. But farmaish I was not very happy with, because I was sure that something was कोई going फिक्स wrong. कर सकता है उसको। हाँ। वो एक झुमरी तलैया से रोज आते थे, राजनांदगांव और झुमरी तलैया। नहीं, झुमरी तलैया तो नहीं, मगर हुआ क्या, एक बार क्या हुआ, एक गाने के करीब 12 लेटर्स आए, पोस्ट कार्ड जो आए 12 पोस्ट कार्ड, तो कोई किसी के, कोई दिल्ली से आया हुआ है, कोई पूना से आया हुआ है, कोई बम्बई से है, कोई अहमदाबाद से है, कोई लाहौर से है, लाहौर तो नहीं, सॉरी, ग्वालियर से है। तो ये सब लेटर्स तो थे, लेकिन जो पोस्ट कार्ड मैंने पलटा तो उसका पोस्टमार्क था कालबा देवी बम्बई। अच्छा, सब यहीं से आए थे। तो मैंने कहा यार ये तो सब चोरी चपाटी चल रही है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। एंड आई वाज अ गांधीवादी, आई वाज वेरी keen to have an absolutely correct, honest way of dealing with this. So I said, look, we'll stop this and we'll create radio clubs. And those then gave you the input. You see, these radio clubs were very dedicated listeners, Right. and we had about 400 radio clubs all over India, of which at least 200 used to send very regularly their Feedback. weekly list of Right. popularity. Welcome back now to the second part of this very unusual and very special Walk the Talk with Mr. Ameen Sayani, the man who is a walkie-talkie encyclopedia of Hindi film music and in fact in many ways history of India. So Ameen Saab, back to Walk the Talk, and I hope you again give our viewers the same welcome. आपका favorite one, बहनों और भाइयों वाला। हाँ, बहनों और भाइयों, वो लोग जब मैं कहता हूँ ना बहनों और भाइयों, कुछ लोगों ने पहले कहा था मुझे कि आप जानते हैं कि आपसे पहले किसने कहा था ये बहनों और भाइयों? मैंने कहा किसने कहा? लेडीज़ एंड जेंटलमैन हम तो कहते ही हैं। नहीं, हिंदुस्तानी में भी और अंग्रेज़ी में भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स किसने कहा था? तो पता चला कि विवेकानंद ने कहा था। तो आप मैंने कहा मैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन पर। तो फिर आप एक अपने लहजे में कह के बताइए ना, बुलाइए सबको। बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त, आपका रेडियो साथी अमीन सायानी बोल रहा हूँ, एक सीधा साधा इंसान, संगीत प्रेमी, जो बस दिल से बात करता है और दिल में बसता है सबके, और मैं सब हम मेरे दिल में बसते हैं। मेरे सुनने वाले जो हैं वो मेरे भाई बहन जैसे हैं, बहन भाई जैसे हैं, तो इसलिए मैं इसीलिए we are so fortunate that you found the time for us. It was my great pleasure. So sir, let's now resume our journey. अमीन साहब, एक सिबलिंग राइवलरी तो थी लता और आशा की, कुछ आपस में सिबलिंग राइवलरी, जो बहनों बहनों में, भाई भाइयों में कंपटीशन होता है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। जी हाँ। मगर लोगों ने उसका पतंगड़ बना दिया था। जी हाँ। People started saying that no, Lata and Asha have always been fighting with each other and criticizing each other, and Lata doesn't like it when Asha sings the song which she's supposed to sing. In fact, that was the reason for the tiff between Burman and Lata. S.T. Burman. And Asha doesn't like his. So I asked both sisters differently in different interviews whether this was true. Asha mentioned in her interview that, look, she is my elder sister, I love her, and she has got a beautiful voice, but she has a style and I have my style, so we sing in different things. Otherwise, there's no rivalry, no tiff, nothing.
तो सर जब ये पार्टनरशिप शुरू हुई आर.डी. बर्मन और आशा भोसले की, तो ना सिर्फ ये पर्सनल थी, दे गॉट मैरिड एंड एज यू सेड इट वाज वेरी अनयूजुअल फॉर ए मच ओल्डर वुमन टू मैरी ए मच यंगर पर्सन दोज डेज, बट ऑल्सो दे मेड ग्रेट म्यूजिक. Oh yes, fabulous, fabulous. I will give you just two examples of two very different types. Very contrasting types, yes. एक तो था वो गाना जो कि जहाँ तक मुझे याद है रफ़ी साहब का पहला गाना था आर.डी. बर्मन के लिए. जी हाँ. और वो बड़े शर्माते हुए उनसे गवाया था उन्होंने. हाँ, क्योंकि आर.डी. बर्मन को तो किशोर कुमार और मन्ना डे पसंद थे. और वो गाना था कि आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा. और जिसमें आजा आजा आजा. जी हाँ, जी हाँ. तो that was one example of a very lively Western type of song. But at the same time, they had sung at the same time, Pancham made some beautiful soft music. Sensitive soft music. For Asha to sing. तो वो ये गाना था ना कि मेरा कुछ सामा तुम्हारे पास पड़ा है, इजाजत का गाना. और बड़ा अनयूजुअल था. बड़ा अनयूजुअल सॉफ्ट गाना. जहाँ तक मुझे याद है गुलजार लिखा हुआ था. तो इसके बाद आप चले कि एक फिर वो एरा बढ़ा बहुत आगे किशोर कुमार का, क्योंकि किशोर कुमार ने फिर एक्टिंग कम करी और गाना ज्यादा गाया. तो किशोर कुमार की पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बताएं और जो आपके एक्सपीरियंस हो. किशोर कुमार के बारे में पहले तो इतना मैं बता दूं, कन्फेशन है मेरा कि मेरे सबसे फेवरेट गायक किशोर कुमार थे. शुरू से जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से वो मेरे बड़े फेवरेट गाने थे. और इत्तेफाक से मेरे कॉलेज में मुझसे एक साल जूनियर एक लड़की पढ़ती थी जो कि जिसके साथ मैंने ड्रामे बड़े किए थे. और एक बार ड्रामे सिर्फ स्टेज पे असली ड्रामे नहीं. नहीं स्टेज पे बिल्कुल मेरी बहन की तरह थी. तो वो स्टेज पर सब ऐसे ही कहते थे. हाँ, कॉलेज के टाइम में सब ऐसे ही कहते थे. तो वो एक बार उसने गलती से उसके मुंह से निकल गया कि किशोर कुमार की बीवी जो है ना रूमा, वो मेरी कज़न है. मैंने कहा यू आर किशोर कुमार्स वाइफ्स कज़न? I said, my God, then why the hell have you not introduced me to Kishorda? Please take me immediately. तो मुझे वो ले गई किशोरदा के यहाँ. पहली मुलाकात में मैं क्या देखता हूँ कि किशोर कुमार के गोद में एक बच्चा है, वो अमित, और यूँ उसको हिलाते हुए मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं. तो मैंने कहा किशोरदा ये आपका बेटा? हाँ अमित. यू नो दिस अमित जो है वो अभी पैदा ही हुआ है मगर अभी रोता भी है तो सुर में रोता है. तो he was a fabulous person. And then we got very friendly. And often we used to go out together in that car, चलती का नाम गाड़ी type का old car, which used to lie in his compound. And sometimes he used to go out. But Kishore Kumar, was he also a madcap? Was Kishore Kumar a madcap? He was not a madcap, but he was slightly corny at sometimes. हाँ, तो कहानी ये थी कि इसका आखिरी प्रोग्राम था सैररॉन के साथी का. मैं चाहता था कि वो आएँ, और उससे पहले जो उन्होंने मुझे चकमा दिया था, नहीं आए थे वो गीतमाला के लिए. तो मैंने क्या एक ढोंग रचाया, ड्रामा किया. कैसा ड्रामा कि मैंने अपने लोगों से कहा कि देखो आज मैं वो बढ़ती का नाम दाढ़ी के लिए रिकॉर्डिंग के लिए आ रहे हैं वो आज, लेकिन मैं उनसे नीचे नहीं जाऊंगा, जैसे मिलने नहीं जाऊंगा, रिसीव करने. तुम लोग जाओ नीचे, उनसे कहो स्टूडियो में इंतज़ार कर रहे हैं, आइए. तो ठीक है, मैं स्टूडियो में बैठा माइक्रोफोन के पास बड़ा सीरियस होकर, और किशोरदा वहाँ से आए, ऊपर आए, दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसे दौड़ते हुए कि ओके चलिए रिकॉर्डिंग शुरू करें अमीन भाई. तो मुझे जब देखा उन्होंने कि मैं बहुत सीरियसली बैठा हूँ, मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो कहने लगे क्या हो गया, क्या बात है अमीन भाई? तो मैंने कहा कि आपने देखा नहीं किशोरदा, स्टूडियो के बाहर कोने में दो मुश्तंडे पहलवान खड़े हुए हैं कोने में,
जिन कहने नहीं मैंने तो नहीं देखा। मैंने कहा नहीं मैंने उनसे कहा ज़रा छुप कर रहना, लेकिन अगर मैं आज उनकी रिकॉर्डिंग न कर पाऊँ, अगर वो फिर मुकर गए और ये सैराउंड के साथी के प्रोग्राम की लास्ट प्रोग्राम अगर उन्होंने नई रिकॉर्डिंग की तो उनको पीट देना। तो वो ज़रा डरपोक भी थे बहुत, पहले तो घबरा गया, हाँ क्या 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 कर रहे हैं आप। फिर वहाँ से पड़ेगा अच्छा वो गीतमाला की याद आ रही थी आपको, अच्छा, उसका बदला ले रहे थे आप। मैंने कहा हाँ यही गीतमाला का बदला ले रहा था, और मैं आपको वो आज मैं कराना चाहता हूँ, ये साथी के प्रोग्राम की कलास प्रोग्राम है, आप रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगा। तो कह लें अच्छा चलिए करूँगा, लेकिन एक शर्त पर करूँगा। कह लें शर्त यह है कि आप इस रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं बोलेंगे, आप जाकर कोने में बैठ जाइए और मैं पूरी रिकॉर्डिंग खुद ही करूँगा, पूरा प्रोग्राम खुद करूँगा। मगर भाई तो मैंने कहा मगर किशोरदा ये आज तो साथी का प्रोग्राम है, मुझे आपके साथियों के बारे में कुछ पूछना है आपसे। तो कह रहे ना वो उन्होंने कह रहे मेरा कोई साथी नहीं है। अमीन भाई तुम बहुत 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 बोर करने लगे हो। अरे किशोरदा, भला इसी में है कि तुम चुप हो जाओ और मैं सबको बोर करूं। ठीक है चलिए, अब मैं और ज्यादा नहीं बोलूँगा।